आई एम इंटरनेशनल मेंटर एंड मोटिवेटर। जहां बच्चे बुलाते हैं वहां चले जाते हैं। तो आउट ऑफ इंडिया बच्चे बुलाते रहते हैं। इंडिया में तो एक से एक टीचर हैं, इंडिया के बाहर टीचर की कमी है। तो मैं सभी लोगों को पढ़ाने के लिए बाहर निकल लेता हूँ। लास्ट ईयर नहीं, 2 महीने पहले मैं किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान ताशकंद के बॉर्डर को पैदल चलते हुए पार किया था। और वहां से मैं आर्मी में पहुंच गया। आर्मी में मैं AK-47 शॉटगन और पिस्टल चला के आया हूँ। ओके, मेरे इंस्टा पे जाना, देखना AK-47 चला टन टन एकदम निशाना लग रहा है। ठीक है, क्या आवाज आती है। चलो। Yes, appearance of the colon on double contrast barium enema examination is shown in image. Identify the A, B, C respectively. Yes. अरे वाह, डुग्गू ने देखा है। क्या प्यारा नाम है, डुग्गू। Yes. So we are looking for this our part, radiological examination. बड़ा गंदा सा है, but even try to understand. Can you see? ये ऐसा जा रहा है, ये देखो। It is making the turn. It is making turn, and it is making the turn in this way. Okay. Yes, you can say this is ascending colon. Sir, this is the transverse colon. This is the descending colon. Sir, it is sigmoid colon. तो बेटे ये क्या हो जाएगा सर? दिस इज द हिपैटिक फ्लेक्सर। इधर क्या हो जाएगा सर? दिस इज द स्प्लेनिक फ्लेक्सर। और ये क्या है? डेफिनेटली ये सी, दिस द ट्रांसवर्स colon. So according to it, yes, what you can see, sir, A is the splenic flexor. A, B, C are respectively. A is the splenic flexor. Yes, it is splenic flexor A. Then B is the hepatic flexor, and then C is the transverse colon. So C is answer. बहुत बढ़िया यामी। पबजी खेलो, लेकिन याद रखो, कंट्रोल योर सेल्फ ड्यूरिंग प्लेइंग द पबजी, क्योंकि खूब खेलोगे पबजी फिर बेचोगे सिर्फ और सिर्फ सब्जी। ओके, कैसा लगा मेरा शायरी? खूब खेलोगे पबजी तो बेचोगे सिर्फ सब्जी। ओके, यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट। शुक्रिया शुक्रिया आमिर भाई, शुक्रिया। यस, एट विच लेवल ऑफ द ब्रेन द न्यूक्लियस सप्लाइंग टू द माउंट मसल इज सिचुएटेड? सर, दिस इज द आई, हियर इज द नोज, हमारी इज्जत नोज। You can see the lens, you can see the iris, this all. This is the second cranial nerve. So you can observe one straight muscle. This is straight muscle. So recti, it is medially the medial rectus. This is the lateral rectus. Arrow had been put over the medial rectus muscle. This is the our INICET AIMS 2016-17 question. Okay, so this third medial rectus is a part of which cranial nerve? Third cranial nerve. Lateral rectus is a part of which cranial nerve? Sixth cranial nerve. All extraocular muscles are supplied with third cranial nerve, except SO4, LR6. We know. So the question that which level of the brain the nucleus supplying to the marked muscle is situated? So third cranial nerve nuclei is located where, sir? In the midbrain. So look here, facial colliculus, sir, here 6th and 7th nucleus are located. Superior colliculus, sir, 3rd cranial nerve nucleus. Inferior colliculus, 4th cranial nerve nucleus. Yes, inferior olivary, here the 10th nucleus is located. So answer is the B. कैसे डिफरेंशिएट किया बेटा? ये देखो, आप ऐसा देख रहे हो क्या? यस, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा, और ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये कंटिन्यू करके सिग्मॉइड कोलॉन को देखो। ये सिग्मॉइड कोलॉन, ये एस शेप में कर्वेचर ले रहा है। सिग्मॉइड कोलॉन इज अटैच्ड विद द आवर डिसेंडिंग कोलॉन। तो यस, ये आपको क्या है? लेफ्ट है ना, तो ये क्या है? राइट। अगर आप इमेज को पलट भी देते हो तो भी बेटा ये डिसेंडिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सिग्मॉइड कोलॉन के साथ अटैच्ड है। तो जिधर सिग्मॉइड कोलॉन, यस, उधर आपका स्प्लेनिक फ्लेक्सर, और जिधर सिग्मॉइड कोलॉन अटैच नहीं है तो वो हिपैटिक फ्लेक्सर। ओके, यस। ऑलिव पे बेटा 9, 10, 11, बट मेन न्यूक्लियस इज द आवर, यस, यू कैन से 10th ना, बिकॉज 11th न्यूक्लियस इज रीचिंग टू द स्पाइनल कॉर्ड लेवल आल्सो। ओके, डिस्क्रीट न्यूक्लियस, मेन न्यूक्लियस इज द 10th ना, जस्ट
on the side of the olive there is the our 10th nucleus, that's why. Most lateral nucleus of the cerebellum, yes, ये बताओ, ये पढ़ चुके हैं. Most lateral nucleus. अरे यार रिपीट करने के लिए मत बोलो भाई. 40वां वाला क्या, अरे अभी तो बताया इसको, तो तीसरा बार हो जाएगा भाई. ये प्रज्वल, ये देखो ना भाई, ये देखो बेटा, ये असेंडिंग कोलॉन, ये आपका ट्रांसवर्स कोलॉन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलॉन, और ये देखो ये कंटिन्यू हो रहा है. ध्यान से देखो, एनाटॉमी मींस ऑब्जर्वेशन. ये एस शेप्ड है, सिग्मॉइड कोलॉन. यस, अगर ये सिग्मॉइड कोलॉन है तो डेफिनेटली बेटा सिग्मॉइड कोलॉन इज रिलेटेड विद द व्हाट, स्प्लेनिक फ्लेक्सर, लेफ्ट साइड. तो बेटा ये राइट साइड होगा ना. अगर कोई भी चेंज होगा, इधर से उधर हो गया इमेज, तब भी बेटा ये क्या है आपका, ये सिग्मॉइड कोलॉन इज कंटिन्यू विद द अवर स्प्लेनिक फ्लेक्सर. ओके, अब चौथी बार रिपीट करने के लिए कोई नहीं बोलेगा. मोस्ट लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द अवर सेरिबेलम, आंसर इज द डेंटेड न्यूक्लियस. चलो फॉर्मूला बताओ. दे गर्लफ्रेंड, otherwise D for dentate, E for emboliform, G for globose, and F for vestigial. So these nucleus are from lateral to medial. Dentate nucleus, agree? Doctor eat Gautam Nagar food, yes, doctor eat good food, you can do. So dentate nucleus is the answer. Dentate nucleus is the largest nucleus. Dentate nucleus is the lateral most nucleus. इसलिए कहते हैं कि dentate nucleus के L लग गए. Okay sir. Next, see here the 43. A kind of the hernia is shown in the image which anatomical structure is not present in the boundary of the related space. See here. So you can observe this one. एक mass नजर आई है. Okay. This is what, this is the our curvature, this is the iliac crest, and you can see this muscle, sir, this muscle is nothing, this is our, yes, latissimus dorsi. चलो ओके, ये कोई और मसल नहीं बेटा, ये क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस. ये क्या है बेटा, आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस. ओके फाइन. सो दीज आर द थिंग्स. तो ये क्या है सर, दिस इज नथिंग, दिस इज द अवर लंबर hernia. Sir, this is the our lumbar hernia. Getting the point? Okay, done. तो अब ऑप्शन को देखो, है ना. सो दिस इज द अवर लंबर हर्निया, दिस इज द पेटेट ट्रायंगल. यस सर, दिस इज अवर पेटेट ट्रायंगल फ्रॉम वेयर द लंबर हर्निया इज ऑकरिंग. तो बेटा ये क्या, एक्स्ट्रा ऑब्लिक, दिस इज द लैटिस मसल, दिस इज द iliac crest. अब वो क्या पूछ रहा है सर, विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द बाउंड्री ऑफ द रिलेटेड स्पेस. बिना पढ़े आगे बढ़े, इतना भी बनाने की जरूरत नहीं थी. लैटिस डॉर्सी, यस, दिस इज द एरिया ऑफ द लंबर एरिया. ओके, लैटिस डॉर्सी से. ट्रेपेजियस, अरे मेरे बाप, ट्रेपेजियस तो इधर हेड में होता है, अपर शोल्डर में होता है, यहाँ कहाँ से आएगा. तो अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं भी जान रहे तब भी बेटा आंसर मार्क कर सकते हो ना. सर iliac crest, yes definitely it is the abdomen lower part, yes. पढ़ने की जरूरत नहीं है, without knowing you can mark this answer ना. agree बेटा? done. okay sir, so what you have to remember this thing. yes sir, so look here, this one, yes, this is the trapezius. Chasagnac tubercle is related with which vertebra? yes, ये कौन बताएगा. चाय चाय सा कोई नहीं, ट्यूबरकल. पूजा हो गया, कहाँ क्यों पूजा हो गया, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था. हाँ, अगर सही तरीके से कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो पूजा, अर्चना, आराधना, साधना सब हो जाएगा. ओके, चैसगनेक ट्यूबरकल इज रिलेटेड विद व्हिच वर्टिब्रा? कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केशन ऑकर्स एट द our thyroid cartilage level C3 C4. okay, thyroid cartilage upper border. okay, yes, C6, answer is C6. see here, chasagnac tubercle, just turn this C in this way, 6, खत्म, टाटा बाय बाय, गया. आंसर इज C6. ओके, प्रज्वल ने थैंक यू बोल दिया. प्रज्वल को खोपचे में ले जाओ, थोड़ा समझा के आओ. ये सब लोग ना, क्या है ना कि रेगुलर क्लास में आते नहीं है, TND में आ जाते हैं मुंह उठा करके, क्लास का सिस्टम जानते नहीं है. प्रज्वल तुम तो क्लास में थे यार, तुम तो क्लास में थे, फिर तुम ऐसा क्यों थैंक यू बोल रहे हो यार. इनको खोपचे में थोड़ा गोलगप्पे खिला के लाओ थोड़ा सा. यस, सो दिस इज अवर C6 vertebra. yes, transverse process, and this is the our spine. sir, this is the which vertebra? sir, C6.
So in the transverse process, anteriorly there is an antetubercle, posterior tubercle. Yes. So just on front of the our this antetubercle, there is the our artery. So which artery is located here? So this is the our common carotid artery. Which artery? Common carotid artery. So this anterior tubercle of the transverse process of the C6 vertebra is known as chasagnetic tubercle. Sir, this is our chasagnetic tubercle. Chasagnetic tubercle, this one. Yes, so common carotid artery is palpable at the C6. This is also known as the carotid tubercle. Done? Okay, sir. रोशनी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। क्यों हाइपोग्लाइ ऐसे कुछ नहीं करना है। ये देखो, ऐसे लो, ऐसे फाड़ो और ऐसे खाओ। ये लो रोशनी, तुम्हारे लिए चॉकलेट। चॉकलेट कौन फेस्टा, पता नहीं कौन सा चॉकलेट है। ओके, अरे खा लो ना, कैमरा बंद होना चाहिए, बस कैमरा बंद होना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके फाइन। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विडोज आर्टरी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विडोज आर्टरी? टेल मी विच आर्टरी इज द विडोज आर्टरी। बोलो बेटा, विडोज आर्टरी कौन सी है? अरे भाई ये तो फोटो दिया है। यस, लाडा। लाडा इज द अवर विडोज आर्टरी। Lada is the Windows artery. So try to understand. Sir, this A is the aorta. Better to say arch of aorta. This B is the our pulmonary trunk. Yes, sir. It is the pulmonary trunk. Can you see? This is our right coronary artery. Here is the left coronary artery, which is dividing into the left anterior descending artery. Also you can say the anterior interventricular artery. Okay, yes, this d is the right coronary artery, and here is the left circumflex artery. Agree बेटा? सर दिस इज आवर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। वेन भी बता दें। यस, डुगू बिल्कुल बता देते हैं। ऋतिक रोशन इज माय फेवरेट हीरो। दिल मेरा कहने को है? ओ दिल वालों, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। डुगू के लिए हम बता देते हैं, एक चीज बस याद रखना बेटा, दिस इज एंट्री इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। So this is the most important artery. So the most important vein is present with this IVA. Yes, great cardiac vein. बड़े बड़े लोगों के साथ बड़े बड़े वेन होते हैं। ओके, यस, ऋतिक रोशन फैन, आई एम ऋतिक फैन। यस, आइवा इज द विद द ग्रेट कार्डियक वेन, द लाडा द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी इज द विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन। गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके, ओके, एग्री एवरीबॉडी? Fine. Okay, sir. Now see here, there is another right coronary artery. Yes. Ye right coronary artery. Remember, beta, here is our marginal vein. So this marginal vein is the not too much bigger. So here is the one vein. Which vein is located here? Sir, here is our small cardiac vein. Small cardiac vein. Okay. With right coronary artery, there is our small cardiac vein. Right coronary artery is not too much important. Left coronary artery, left circumflex, that is more important. Okay, next, on the backside there is a one another piva, posterior interventricular artery. So posterior interventricular artery is with the neither the more big nor the less, so it is with the middle cardiac vein. What I want to tell you, yes, dugu, there is the our great cardiac vein, middle cardiac vein, small cardiac vein। ग्रेट कार्डियक वेन, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। यस, बड़े भैया जो है बड़ी भाभी के साथ रहता है। सो हु इज द बेस्ट आर्टरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी? आइवा। द मिडिल कार्डियक वेन इज विद द अवर पोस्ट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पाइवा, एंड स्मॉल कार्डियक वेन, यस, इट इज विद द अवर मार्जिनल आर्टरी। ऑल्सो यू कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। ओके, इतना जरूर याद रखना, ठीक है? ओके सर, नाउ लुक हियर। Yes. So answering this question. What was the question? That which of the following is the widow's artery? Vidhva artery. The Iva artery is the Vidhva artery. So you can say the C. C is the widow's artery. Answer is C. Okay. Now tell me, thinnest cranial nerve. First cranial nerve? No. It is the shortest cranial nerve. No? Fourth cranial, it is supplying only one muscle, SO4. Okay. So yes,
very less number of the axon is there. Okay, sixth cranial nerve, no sir, sixth cranial nerve is the longest intradural cranial nerve. Vagus nerve, it is the longest cranial nerve. So answer, the thinnest cranial nerve is the fourth cranial nerve, na? Fine. Yes. Question number 48. Which nerve is most susceptible to get damage in the head injury? Now tell me the answer. Sixth cranial nerve is the most common cause. Why? Tell me why. Tell me why. Longest intradural course. Very good. Very good. Dural canal. Very good. अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं एनाटॉमी. सी हियर. लॉन्गेस्ट इंट्राड्यूरल कोर्स तो क्या सी हियर. This is the our yes midbrain, pons, and then medulla, right sir? So the sixth cranial nerve nucleus is here, right sir? So this nucleus, this nerve is running out and coming through the pontomedulla junction. Here is the our cisterna pontis. Yes sir, cisterna pontis is here. Now this nerve is changing the direction forward, again changing the direction upward, then it is very good prajwal, bahut badhiya, dil jeet liya prajwal. So it is running forward. So here is one sharp bony edge. This is the petrous temporal bone. So this is the petrous part of the temporal bone. And then it is running along the our yes cave like sinus, cavernous sinus, lateral wall. This nerve is running through the our lateral wall, the cavernous sinus. Okay, sir. And here is the our yes intradural canal. This is a dural canal. It is passing through the our superior orbital fissure. Yes, sir. And it is supplying to the which nerve, which muscle? Sir, it is supplying the our lateral rectus. Sir, it is supplying the our which muscle? Sir, it is supplying the lateral rectus. Okay. So there are the four causes why the sixth nerve is most commonly damaged. First, it is in close contact in the CSF. Sir, it is with close contact with the CSF in cisterna pontis. So whenever there is a change in the CSF, there is the pressure. So it is causing break at this part. Next, it is having the multiple time change in the direction. So it is very bent structure. So remember, it is having the multiple bends. That's it. Next cause. Sir, it is kept over the sharp edge of petrous temporal bone. Is it okay? Got the point? Okay, sir. And now it is passing through the fourth cause, longest intradural course. So here is the word Dorellos canal, longest intradural course. Okay, fine. So these are the fact, four cause. So what is happening here? It is CSF, so it is raised ICT, it is getting broken. Multiple bent, so that's why it is getting broken. It is the sharp knife-like projection, so it is getting easily damaged. Yes, this entire end is fixed. These end are mobile. So whenever there is a raised interpenetration head injury, it is getting damage at the certain point. Okay, got the point? So there are the four causes. That's one. Identify the related syndrome. Tell me, this is the wristwatch neuropathy. Yes, this is right. The same was studied by our Wartenberg. So the Wartenberg syndrome is also right. Yes, it is a chairalgia paresthetica. Yes, all are correct. D. Okay, remember the Wartenberg sign is related with the ulnar nerve, but here we are talking about the syndrome. Wartenberg sign you will see in the orthopedics. Done? Okay, sir.